Hello, people. I'm Jaby KOAY, joined by ACHARA KIRK. What's up? We're looking at a SLAYY point video. These ads are spoiling TV. IPL ads. Y'all, thanks so much for joining us. Please do me a huge favor and hit that subscribe button, bell icon, all notifications, and pretty please vote this up to let YouTube know you're enjoying what you're watching. And while you're subscribing and upvoting, make sure to subscribe to SLAYY point. There's a link in the description below. You can click on that link, give the original video an upvote, subscribe to them from there. Here we go. क्या पता है जो अंडे रोज खाते हैं वो हट्टे कट्टे होते हैं। सचिन ने बोला फिर तो मैं रोज अंडे खाऊंगा मम्मी। बेटा तू रोज क्रिकेट ही देखा कर, अंडे। I mean, I eat carrots because of Bugs Bunny. And spinach because of Popeye. इलायची पान मसाला कमला पसंद अनोखा स्वाद ठीक है। विमल बोलो जुबान केसरी। Oh, I heard there was a lot of controversy with Akshay Kumar about that. IPL फैन हूँ भाई। क्या है? IPL फैन हूँ भाई, रोज IPL देखता हूँ। हम बॉल में थूक लगाते हैं, T20 से टेस्ट मैच बॉल बन जाती है। She's got it too. बेटा अकेले आज माँ के हाथ का तंबाकू खिलाऊंगी। फेवरेट टीम कौन सी है? RCB। क्यों? लाल है ना, लाल कल किसका मैच है वैसे? यंगेस्ट पॉपुलेशन को हम परफेक्ट दिशा में भेज रहे हैं। ओवर्स है 20, पान मसाला के ऐड 250। खुद खा भी नहीं रही भाई। कौन सा 15 रुपए देके साइबर कैफे से VFX करवा लिया। वाओ। डैंड्रफ गिर रहा है मुंह में। अगर ये देख के तुम्हें लग रहा है कि सेलिब्रिटीज एक्चुअली ये सब खाते हैं, तो मैं भी कुछ भी खाता हूँ। मैं रोज पेन की इंक पीता हूँ गाइस। Over here in the States, baseball is, I guess, the closest thing we can compare to cricket, right? Sure. And so, as a kid, I remember seeing these gum packets that actually looked like tobacco packets that, like, you know, you chew tobacco. A lot of baseball players, I guess, do that. And so you could buy these gum packets that sort of emulate that if you wanted to be like the big guys and the grown-ups. And you could, like, chew these, like, basically it's just gum, but it's made to simulate the same thing that baseball players are chewing on the field, which is tobacco. Yeah. But it's like, it still speaks to the problem, which is you're advertising to kids tobacco. And it's weird too what they're pointing out, like seeing the one, like, what is it, Amitabh Bachchan, and was that Hrithik or someone, and they're like pouring the thing into their mouth, but they're not even doing it for real. They're using VFX because the actors don't even want to do it. And that was the whole controversy that I had heard about with Akshay Kumar, because apparently he had been pretty public about the fact that he would not do one of these ads. And then he did one. And it's like, what are you doing, dude? कितना रियलिस्टिक। फेयर एंड लवली खाता हूँ, खा के हकता हूँ, पिछवाड़ा गोरा हो गया और लवली भी। If only that worked. ये त्योहार है तो ऐड वाले हैं त्योहार में आए बेशरम रिश्तेदार, जो हर प्लेयर को जाके बेटा नाच के दिखाओ ना, बेटा नाच के दिखाओ ना। Oh God. रुको। अरे भाग गए रिश्तेदार। इस जन्म का बदला निकाल रहे हो उनसे। किसी दिन कोई प्लेयर डायरेक्टर का थोबड़ा पकड़ के पुल शॉट मार देगा। डायरेक्टर से खिलाओ ना किसी फास्ट बॉलर का बाउंसर, वो भी फिर ऐसे बिन मदरबोर्ड का चिट्टी रोबो जैसे हिलेंगे। इन घिनौनी हरकतों की वजह से लोग क्रिकेट ही छोड़ दे रहे भाई। जैसे लास्ट टाइम के एक कटोरा स्टेप वाले, सोचा कि ना ये छुरा मैं खुद में वापस नहीं घोप रहा, अलविदा क्रिकेट, मैं चला कमेंट्री करने। और फिर ये जो ऐसे शादी में टल्ली बाबूजी जैसे नाचे थे, इतना इस साल for a white guy? लिया ही नहीं। Aww, his dancing was so bad. कि अगर ये टाइगर जैसा डांस सीखने के वो 2 मिनट में देख लेते तो आज किसी टीम में होते। एक तो जियो वालों का हर साल अपना ही DID चलता है। मुंबई के मैच में ऐसे ही नाचते हैं ओपोनेंट्स। अरे हमें भी तो चांस दो ऐसे नाचने का। फिर स्टोरी लाइन की पार्क में बैठी आंटियों को ताड़ रहे ऋषभ पंत, जूम कर करके आंटी ने फ्लाइंग किस दी तो 3 लौंडे जियो जियो करके नाचने लगे। नचवाना काफी बेइज्जती नहीं थी कि ठरकी भी दिखाना था। देश की शान प्लेयर से कौन सा नशेड़ी डायरेक्टर ये सब करा रहा है यार।
का कैमरा के साइड में एक लोडेड AK-47 है। He does look like he's lost the will to live. क्विट मिशन का ऑप्शन नहीं होता। That's exactly it. It's like these guys didn't come up learning how to dance for a camera. They came up learning how to play and be the best in that field. Yeah. The thing no one prepares you for is that if you become the best, you have to start doing all these other things of becoming like the TV monkey, right? Yeah. Regarding Akshay Kumar, regarding anybody who does this stuff, like I personally would like to think I would not ever take money to do an ad for tobacco or anything that is basically killing people, right? Yeah. I would like to think I wouldn't. I'd like to think I wouldn't. I would like to think that my moral high ground is so high, there's no way I would ever stoop to that. But if you paid me enough money, I might do it. Like, that's just me being honest. The thing about it is, you know, a long time ago, Mel Gibson said he would never do Lethal Weapon 4. Yeah. He would never do Lethal Weapon 4. And Warner Brothers was like, we'll pay you $25 million. Nope, not doing it. $30 million. No. $35 million. No. $40 million. Okay. It's like, at a certain point, like how much money do they have to keep offering you before your morals stop mattering? You know what I'm saying? It's hard to say no to that. It's like you got bills to pay, you got kids to feed, or whatever. Like whatever it is that you need the money for, it's hard to say no at a certain point. You've got another patriotic movie that you'd like to produce. Taking the money from the bad guys to make something good and patriotic. But personally, like, I would never, ever, ever, ever do a tobacco ad ever. Unless they paid me a fuck ton of money. I'm trying to be as real as possible. And I feel like any one of you watching, if you think you would never do it yourself, you're lying. That you wouldn't even at least consider it. True story. I have done one. Get off this channel, A ACHARA. long time ago. Not welcome back. No cigarettes were smoked in the ad because you can't do that anymore. Yeah. And secondly, I wouldn't do it again. Yeah. Unless they paid you a lot of money. No, I don't think I would. I don't know. Who knows? What if they paid you $10 million? You would say no? Exactly. Look at that hesitation. क्या रियल लाइफ में मन कर रहा है जियो के टावर से कूद जाऊं। इन बेचारों के पास तो जियो का सिम है भी नहीं। हर साल हर एड मीटिंग में एक ही आइडिया कैसे निकल रहा है। IPL आ रहा है। Show me your best ideas. नचवाते हैं। Hey, if you got something, work it. If it ain't broke, don't fix it. 8 seconds. हर एड में ये दारू का एड है। प्लेयर्स नचवा दो। सारा फुटवर्क तो यही लगा दिया भाई ने। नागिन डांस एरोबिक्स एडिशन। इनके डिमांड से प्लेयर भी परेशान हो चुके हैं। भागना तो चाहिए ना। फैंटेसी ऐप का एड, प्लेयर्स नचवा दो। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ऐसे करोगे आप, उसके सारे फॉलोअर्स भाग जाएंगे ना सर। बस गई मेरी फैन फॉलोइंग। एक ऐसी स्कीम है कि वहाँ पैसा हारो और यहाँ फॉलोअर्स। आंटी फोन को घुमा लो, वर्टिकल होती है रील्स। मैं कर लेता हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ। भाई को ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर भी कभी इतने टफ नहीं लगे। कमीने डायरेक्टर थोड़ा इजी कुछ सलमान टाइप करा लेता, कब काम आएगा ये सब। फिर होटल का एड, प्लेयर्स नचवा दो। हेलमेट का एड, जिसमें प्लेयर्स ने सोचा होगा आज धूम के जॉन बनेंगे। नहीं, स्क्रिप्ट थी जेरोक्स मशीन की औलादो 5 दिन से एक ही स्क्रिप्ट से पासिंग द पार्सल खेल रहे हो क्या? वो भी सोच रहे हैं अब इससे क्या स्टेप निकालें। 1 2 3 4 ये हेलमेट कैच आउट। इतनी एनर्जी। दोपहर की नींद से कुंभकर्ण को कौन उठा ले आए हेलमेट के बिना, और इतने नींद में कभी बाइक ना चलाएं। ये है मैसेज। सारे क्रिकेटर्स के अंदर से इतना डांस निकाल कैसे लेते हैं? डायरेक्टर पक्का बोलता होगा मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, दोनों नाचे। Players vibing because no choice. एम्पायर अंग्रेज राज को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? झंगे पीट के उलाला कि वो दिन भी क्या दिन थे। अभी ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लहरा दिया। फिर पता चला प्रीमियम भूरी चीनी का एड है। 5 करोड़पति Logic was harmed in the making. इतना मचल उठे। जैसे करियर का मेन गोल था शक्कर चाटना। वर्ल्ड कप 6 चीनी दे दो। अब सुंदर पड़ोसी हमसे शक्कर मांगेगी। ये और अगर एड वालों ने सिर्फ 99% टॉर्चर किया तो बचे हुए 1% की कमी टीम के सोशल मीडिया वालों ने पूरी कर दी। इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे नचवा के।
0 IPL ट्रॉफीज के बाद भी RCB। ये कर लो पहले। ठुमके से प्यूमा कैसे प्रमोट हो रहा है? Oh God. Oh my God. No, you did not. गुस्सा था कि किम कार्दाशियन भी शर्मा जाए। ये रिंकू नहीं रिंकी होती, अभी मैं DM करता। इंडियन पिछवाड़ा लीग नौरा सदमे में असली कच्चे बादाम तो यहाँ हिल रहे हैं। विकेट के बाद ऐसा करो, ये देखने के लिए लॉन्डे बार बार आउट होंगे। और फॉरेन प्लेयर्स से देसी चीजें करवा के डायरेक्टर के मुंह से पानी आ जाता है। यहाँ लुंगी पहना के डिप्रेशन का फिरता उदाहरण। इनको वार्म अप बोल के यहाँ ले आए जहाँ सिर्फ भेजा गर्म हो रहा है। You know, what it comes down to is all of this stuff is kind of a democracy in a way, because if you're not paying attention to the ad, they'll do something else. They'll shake it up. But the fact of the matter is, if people are still paying attention to it, they'll just keep using the same thing over and over again. If people are content with that and not asking for something more, they'll just keep reusing it. It's not even like they have a choice, because if you're watching IPL, the ads are going to show up. Like, what are you going to do? Well, I feel like stop watching IPL? You're not going to stop watching IPL. There's got to be a way to measure these things. They're ad companies, right? And so you can see if it's like, if your sales go up as a result of these commercials, or if there's no change at all. That's what it comes down to, is everybody goes where the money is. And so, you know, they're like, you don't feel good about doing it, but you're like, they're paying me too much to not do it. And who knows, they might even be contractually obliged as part of their like IPL contract with whichever team they're playing for, that, that's true, you have to do a certain number of ads per year. Since we're all like armchair advertising agents over here, like, what do you guys think would be better in lieu of these ads? Because if you don't like them, what would you rather see that you'd actually pay attention to? Because that's the point. If there's something else in there and you're not going to pay attention to it, then the ad has failed. You know what I mean? Yeah, so it has to be something that you'll pay attention to, that will connect with you. Like, we have attempted to do that with Skillshare, where we create like sketches around it rather than just being, you should get Skillshare because of blah, 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 and just yapping. Like, we try to create a narrative around it to keep it engaging. But even then, sometimes it's a struggle. I mean, people just like scroll forward in the video. They're like, fuck it, I don't want to watch this. Yeah. You know what I'm saying? And so people are just trying to get your attention. Everything is about buying your eyeballs, buying your attention. कभी इन्हें पानी पूरी खिला दिया, कभी पान। बहुत पसंद आया इन्हें। भाई मकबूल भाई के पाए पिस्ता हाउस हलीम विद शादाब बिरयानी। यस सर। एनीथिंग एल्स? पप्पू ढाबे के खटिए पे बिठा दे इनको, फूड ब्लॉगर बना दे। गजब चीज है यार ये तो। लिटरली पिच पे बवासीर कराएंगे फिर। अब देखो, दुनिया में प्लेजर, आनंद बहुत चीजों से मिलता है, बट एड वालों को एक ही चीज से मिलता है, फॉरेनर्स से हिंदी बुलवा के। क्योंकि हम पीते हैं कैंट आरओ, कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहो और हेल्थी रहो। क्योंकि हम पीते हैं, क्योंकि हम पीते हैं और हेल्थी रहो, क्योंकि हम पीते हैं। Jesus. आप खुद को कैसे हेल्दी रखते हैं? मिला जवाब। आपने खुद तो पिया नहीं, पानी तक नहीं पिया, ऐसे मुंह लगा रहे जैसे नाले का पानी है। और जो 2-4 मेहनती लोग हैं जिन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी, उन एड्स में एक्टिंग करनी पड़ती है, फुल हॉलीवुड लेवल। Hey, don't take me for a ride, हाँ? I love the subtitles. A heart-touching performance. That was a good edit, you guys. Okay. But it's like you said, they're not professional actors. I know. I think people think that it's way easier. They're like, it's just say the lines. But if you don't have the inclination for acting, this is what happens. I remember watching Space Jam as a kid, and I was a big, big Michael Jordan fan, and I thought, wow, he's a really bad actor. Jesus Christ. He ain't no Shaquille O'Neal. That's right, yeah. In terms of acting. Yeah. They're athletes. They're not actors. They're not actors. Yeah. So they're going to deliver the lines in a very cardboard box, clunky kind of way. Stop trying to make them do shit. Just let them play cricket. Maybe that should be the ad. Just let them play cricket. Yeah. देखने नहीं, खेलने जाना है। आज तू प्लेइंग 11 में है। अरे वाह, मैं चुन सकता हूँ क्या? There you asked for it.
गेम स्पिरिट दिन में 2 बार। अरे वाह, मैं चुन सकता हूँ क्या? हाँ चुन लो। क्या आपको फिल्म फेयर चाहिए कि ऑस्कर चाहिए? इस परफॉर्मेंस के लिए तो ग्रैमी भी दे दे। अरे इसलिए तुम लेट हो गए? क्या क्या करवाते हो यार। ये यहाँ देवदास और वो पीछे हंसी रोक रहे हैं। और एक्ट में कंसिस्टेंसी सीखनी है ना तो फॉग से सीखो। कंसिस्टेंटली गोबर एड्स। मैं इसकी भूरी भूरी आंखों में खोना चाहती हूँ यार, मैं इसकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आंखें अच्छी है लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। कहीं ये आपकी बात तो नहीं कर रहे? मैं रोना चाहती हूँ लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। परफ्यूम नहीं लगाता और आप जैसों के मुंह भी नहीं लगता। लेकिन वो परफ्यूम फॉग लगाओ। कुछ ना लगाना भी फॉग लगाने से बेटर है। लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। लड़की है कि कुत्ती? 5 किलोमीटर दूर से ही सूख लिया। ये हुआ था जस्ट ऐड के पहले। लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। रोज कॉलेज गेट पे खड़ी रहती है, वॉचमैन बच्चों की आईडी चेक करता है और ये सबकी बगलें सुनती है। आंखें अच्छी है लेकिन ये परफ्यूम नहीं लगाता। मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ। इसे तो मैं वॉशिंग मशीन में धोना चाहती हूँ। तोहफे में इसे इच गाड़ देना चाहती हूँ। लड़का कचरा है लेकिन परफ्यूम लगाता है। लगाता है? पतिदेव सुपुत्र मेडिटेशन गुरु। पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफे, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। मेडिटेशन गुरु। किसी मेडिटेशन गुरु की पॉकेट से कमला पसंद गिरा ना, लोग चप्पल पे गुटखा छिड़क के उसका मुंह ऐसा लाल पीला करेंगे तो विमल का पैकेट ही लगेगा। कमला पसंद मुंह में हो ना तो कोई मुंह नहीं लग रहा, इसलिए लड़कियां भी सारी उधर देख के बैठी है। और हम कहते रहते हैं कि हॉलीवुड से बॉलीवुड compete करेगा। नहीं, अब नई इंडस्ट्री आ गई है, विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इनके लिए पैसे पेड़ पे उग रहे। अगले साल ओबामा, टॉम क्रूज, रोनाल्डो सब इलायची खाएंगे। जाके मेसी को करेगा जुबां केसरी। निंजा असिस्टेंट रखी है पैकेट काटने के लिए, किसी दिन गला ही काट देगी। ये कितना खाएगा बेशरम। थूक थूक के उसके बाल भी गुलाबी कर दिए। ब्लॉन्ड थी वो। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। इनकी भी सेम जुबान है, इनसे भी दिल एक करो ना। ऐसे थूकते हुए हाथ को सल्यूट बना दिया। अरे आप भी जुबान केसरी। हर ऐड में दिखाओ कि अमीर से अमीर लोग ये खाते हैं ताकि गरीब आदमी उन्हें कॉपी करने के चक्कर में गलत लत लगवा ले। So that is it for today guys। अगर आप नहीं चाहते कि बंदूक की नोक पे जबरदस्ती कोई आपको लुंगी पहना के नचवाए तो सब्सक्राइब जरूर करो और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करो ताकि हम एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाए कि हम भी गुटखा बेचें। And we'll see you guys in the next one। Adiyo। हाँ धन भाई। मैं इसकी भूरी भूरी आंखों में खोना चाहती हूँ यार, मैं इसकी बाहों में सोना चाहती हूँ। So random. Oh, that was a great ad. Like just at the end there, Avijit just in the sumo suit. Wow. Okay. Woo. That was a lot of laughs for sure. But I mean, what they're saying there at the end is true. Like, don't get duped because Shah Rukh Khan or Hrithik Roshan, they're advertising these things, you know, that they would never do. I'm of two minds. What? That they would never do. Shah Rukh Khan smokes. No, but like the chewing tobacco, it's kind of gross. I don't think Shah Rukh Khan would do that. He smokes. I'm of two minds about this because, like I said earlier, it's like if the money's so good, it's hard to walk away from that. It's hard to say no when the money's that good. At the same time, I do consider that as a celebrity of who's very, very established with a lot of clout, you do have a certain degree of responsibility. Okay, when it comes to music over here and video games, like especially back in the 90s when, you know, you had the boom of hip hop with like profanity and whatnot and gangster rap and all that. Even Marilyn Manson was like blamed for Columbine, right? Because of his because his music was somehow responsible for that. Sure. I understand like why people feel like celebrities should take ownership of their position. But like at the same time, people will criticize celebrities for having a stance.
for having a position. Like, who are you to speak on politics? You don't know anything about this. You're gonna simultaneously criticize them for doing an ad even though they shouldn't weigh in on politics. You know, it's like, either you believe that they have influence or you don't. You know, that means something. Maybe that comparison's dumb. But anyway, my point is, at the end of the day, what it comes down to is each person is responsible for their decisions. Each person is also responsible for what their children receive and how their children receive that information, that data. Sure. At the end of the day. So I'm of two minds because I'm conflicted. It's like, yo, get the money. If there's money on the table, you should go get it. But at the same time, you do have an influence. And is that your fault? Everyone's just trying to earn and get to the top of the pyramid. Their own personal pyramid, whatever that is. Everyone's trying to get to the top of their own personal pyramid. I try not to shame people, even if I disagree with it. Well, I think also, if it is, you know, you're like, fine, whatever, you're a celebrity and you do what you want. If you want to advertise these things, then you can. But also, I think as consumers, as people who are watching, we need to get smart as well and realize that just because Amitabh Bachchan is advertising this or Shah Rukh Khan is advertising this thing, and we know that it's not something that is healthy or is good for you, right? You don't have to buy it. You can still watch it and you can be smart enough to realize that it's all smoke and mirrors. It's not real, and you don't have to buy into it. You guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed that. Do subscribe, please. Bell icon, all notifications, and vote this up. I'm Jaby KOAY. This is ACHARA KIRK. Peace out.